वायु टाइप्स ऑफ नॉलेज इन एआई ठीक है मतलब नॉलेज पर कम वैसे रिप्रेजेंट की आवाज में कम टाइप ऑफ नॉलेज दे ओके इन द context of the artificial intelligence AI knowledge can be categorized into several types based on how it's represented AI की जमन सा knowledge चिदे मतलब पर different type of categories की divide शुए थे into several type based on how it's represented process and utilized by the system मतलब कि कम knowledge दे जमन सा specific type knowledge दे मुख्तलिफ types आगा AI मतलब संग utilize की और process की ठीक है each type of knowledge play a crucial role in enabling AI to perform a task ranging from the simple rule based operation to complex decision each type of knowledge play a crucial role हर एक type of knowledge दे पे AI की important role सकी अदा की enabling AI to perform a task को दर्शनी AI सकी मतलब अधिक मतलब AI पदे की मतलब AI से कार की AI दे पर बाय मुख्तलिफ प्रोसेसिंग है ठीक ना AI to perform a task ranging from the simple rule based operation to complex decision making the simple rule मतलब the base operation और the complex decision make operation पूरे ठीक ना so below are the main type of knowledge in AI along with the example for each below are the main types of knowledge AI with the example for each ठीक ना let's जमन सा declarative knowledge टोना जमन सा types of knowledge की जमन सा अवलने declarative knowledge declarative knowledge refer to a factual information or know what knowledge हो मतलब declarative knowledge जमन सा factual information मतलब से कम पर real statement माने बेसी or know what knowledge हो it describe things as they are in open express in the form of the statement or proposition ठीक है मतलब दा जमन simple statement like example जमन सा the capital of France is Paris so the France कम capital चीज़ दा कम से किधर Paris थे ठीक है Paris मतलब the just like your statement दे दा शनी rule if it is rain the ground get wet कोपरस का मतलब बारह नहीं मतलब ground बसी लुंदे ठीक है मतलब दा यो टाइप का statement है उस दीजिए मुझे AI की सिर्फ use declarative knowledge मुझे just like declaration ठीक है the statement to agora vamos para PEC para mostrar o da ocean da leva specific rules use in AI was पर AI के लिए से इस्तेमाल है this type of knowledge is typically stored in data set or knowledge base and used by the AI system to answer question or make logical deduction was come that type of knowledge they can typically store in database which the artificial intelligence come database पाकि वो that type knowledge say story or knowledge base or knowledge base and it is used by the AI system to answer question or make a logical deduction मतलब यह जमन सा knowledge base जैसे database की AI वैसे की जब further processing की सकी इस्तेमाल है और देना मुख्तलिफ logical decision सी आखिर मतलब को परस की user मुख्तलिफ type of question चीज़ें पदी की ये मुख्तलिफ टाइप ऑफ क्वेश्चन सकी द AI सिस्टम ना कि नो AI बस डाटा टाइप डेटा सेट इस्तेमाल ठीक दा मतलब द डिक्लेरेटिव नॉलेज पर्पस द पर मुख्तलिफ क्वेश्चन आंसर बर के फॉर एग्जांपल AI powered chatbot might use declarative knowledge to answer factual question like what is the tallest mountain in the world. For example, you use the AI ने question होगी कि मतलब tallest mountain चाहिए दुनिया किसी शहर है ऊपर के AI तरह से ट्रेन करी कि मतलब तब प्रोसीजर नॉर्मल ट्रेन करी जैसे lot of knowledge और मतलब the capital of the France is Paris and the largest mountain in the world is Mount Everest टेकन ठीक ना मतलब ये दो जगह से क्या टू दे मतलब दिस टाइप ऑफ नॉलेज मख के दी आई सिस्टम ना हम सको वर्क को अगर ट्रेन को ठीक ना को परस के बाद दिस क्वेश्चन की जगह से आंसर वर्क ओके दमसो प्रोसेस दमसो डिक्लेरेटिव नॉलेज दी तम प्रोसीजर नॉलेज हम वेली शु हा सॉरी प्रोसीजर नॉलेज आरे अप्रोच डिक्लेरेटिव नॉलेज जो प्रोसीजर नॉलेज दे बेजम से जान रहे ठीक ना definition procedure knowledge also known is how know how मतलब procedure knowledge actually जमंगा जोकार संग की ठीक दा refer to the knowledge about how to perform a specific task or process so procedure knowledge actually की जमंगा यो दासी this type of knowledge मतलब उपेजन जो task संग की it involves skill method and procedure पदी की जमंगा से involve इसी skill पे की जमंगा से involve methods पे की involve and procedure और जमंगा से पे next जमंगा से involve procedure पे की involve it involves skill method and procedure example to bake a cake you need to mix flour sugar eggs and butter then cake is 35 Fahrenheit per 30 minutes ऊपर से फॉर एग्जांपल मतलब यो AI सिस्टम द ठीक दा अगर तुम यो प्रोसीजर ना यो वर्क ऊपर से जो मतलब कुछ यो केक पके ठीक दा न तो बस कि यू मिक्स फ्लावर शुगर एंड एग्स मतलब तुम आंटी शुगर और फ्लावर मतलब फ्लावर से मतलब कम जमन से उड़ रहा है अवस्था के मिक्स के एंड बटर देन एंड बटर मतलब हम सब कुछ ठीक ना देन मेक इट 35 Fahrenheit 35 Fahrenheit में जैसे कि तब हॉट की for 30 minutes so minutes बाद 30 मिनट पर to drive a car you need to press the accelerator steer the wheel and shift the gear for example कुछ यो कार सके drive के you need to press the accelerator तब सके पे accelerator पर press की steer the wheel
मतलब wheel बस की steer की and shift gear او gear बस की shift की نو زمان type لا شيء procedure دمو procedure وركو يو AI system يتو بسنگ مختلف type of acting के using AI procedure knowledge is often encoding algorithm or script to that guide AI system through a sequence of action. For instance, a robotic arm in a factory might use procedure knowledge to assemble, produce a product of following a predefined set of step. For example, समझ you use an AI के लिए इस्तेमाल for example समझ सपो यो कंपनी की यो AI सिस्टम ते ठीक दनो AI रोबोटिंग आम मानी दोस्त मतलब नॉलेज शो दे चाहता प्रोसीजर हुए दे शो दी जैसे प्रोसीजर द खुद शो दे मतलब को परस के तब यो कंपनी के तो यो प्रोडक्ट से लटके नो मतलब दालास पा तो दासी खोजे ठीक दो प्रोडक्ट के गेट के वो पागा पे स्पेसिफिक लोकेशन की बगदी ठीक ना मतलब अगर टाइप कोड शो दे ठीक दो प्रोसीजर नॉलेज बनी मुख्तलिफ कोडिंग होता माखिना शो ना टाइप प्रोसीजर नॉलेज पे AI की समझ पागा की इस्तेमाल की यूज मतलब आम की इस्तेमाल नूर जुगन को बहिन इस्तेमाल की ठीक दो कुछ AI समझ यो ब्रॉड पीरियड next समझ दे मीटा नॉलेज वो समझ मीटा नॉलेज है मीटा नॉलेज रिफर द नॉलेज अबाउट नॉलेज मीटा नॉलेज मतलब दे नॉलेज अबाउट नॉलेज ठीक ना इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग व्हाट नॉलेज इज अवेलेबल हाउ इट कैन बी यूज्ड इन हाउ रिलायबल और रिलेवेंट इट इज मीटा नॉलेज से मतलब AI सिस्टम की दासी नॉलेज है मतलब सपोज मास माते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद ठीक है कुछ मतलब द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाली की संग पकम की कार के दास से नॉलेज दे नेक्स्ट एग्जांपल में और कर दी आई नो व्हाट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक जापानीज फ्लुएंट फॉर एग्जांपल जम जापानीज लैंग्वेज हम ठीक दा मतलब माता मालूम है मतलब जब फ्लुएंट संग जापानीज लैंग्वेज हम दा टाइप नॉलेज देखो अबाउट नॉलेज फॉर एग्जांपल दिस एल्गोरिथम विल वर्क फॉर स्मॉल डेटा सेट but may fail for larger one. For example, the algorithm चले का ना मतलब specific खास type algorithm चले दे यो the small data set पर कई को परस का large algorithm ही दागर पर दा algorithm में संग behavior की संग बकार के ठीक दा जमान से share meta knowledge दे using AI उस इस्तेमाल AI संग दे meta knowledge is a critical for AI system that need to be adapted and improve over time. मीटर नॉलेज चीज़ें मतलब इंतहाई क्रिटिकल ले AI सिस्टम की और दा मख की द नूर प्रोसेस की अडाप्ट कीगी ओवर टाइम मतलब नूर हम मख की ठीक ना मतलब पता कि नूर हम तरक्की कीगी फॉर एग्जांपल अ मशीन लर्निंग मॉडल दैट माइट यूज अ मीटर नॉलेज टू डिसाइड व्हिच फीचर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मेकिंग प्रेडिक्शन और टू डिटरमाइन व्हेन इट्स नीडेड मोर ट्रेनिंग डेटा फॉर एग्जांपल your machine learning model ठीक है might use a meta knowledge to decide which feature are most important for making prediction for example machine learning या model ले मतलब अगर सके meta knowledge इस्तेमाल the decision purpose पर ठीक है और मतलब अगर दा खबर पेज ने कम मॉडल चले कम पार्ट चले मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द मशीन और कम इम्पोर्टेंट ने दे नु दा समझ से शो यो टाइप ऑफ नॉलेज शो कन अबाउट मशीन or to determine when it's need more training data ये मतलब ये मशीन मॉडल दे पर कल समझ more type of training जरूरत है ओके पहले लेक्चर की इंशाल्लाह मंग three types of knowledge दो types of knowledge three types of knowledge प्रोसीजर हुआ three types of knowledge हुआ इंशाल्लाह पर नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर की मंग नूर types of knowledge हुआ ओके थैंक यू सो मच